Welcome to Beyond Headlines with Ngullie. Moi khan la patrakar ekta bra ja kali portion itu khisa koi thaiche. Dimapur laga Punjab National Bank de ektam asorit thoka laga dhuri paise. Kun manu bra ase na jane etia tak toile dusra manu ekjun laga naam bra paisa dhar guri lui lwa laga thoka kotha ulai ase. Itu manu kun tai laga naam dusra manu bra loi gena paisa dhar loise tai bra moi khan la channel logode kotha koise. Tai la naam na kobo aro chera bi ni dekhabo etia. Kile mane itu do adalat laga kotha aro daroga laga hatei ase. Itu upor tai bra izat la namra chehra ni dekhabole hudi loise. Moi khan etia karni do tai ge naam no kobo helebi ni naam ekta diwo tai ge George mati diwo. Etia karni do itu khisa karni. तो एना होइसे जॉर्ज तो दिमापुर मनु एकता आसे जॉर्ज तो एसबीआई लोगोदे बैंक अकाउंट थाकी राखिना बहिया मनु एकता तो जो कली परसु निजना जॉर्ज फ्रा एसबीआई लोगोदे जाइगिना पैसा धार मांगिसे एसबीआई लोगोदे किले माने तैला नाम दो एसबीआई लोगोदे आसे तो पैसा धार करने एसबीआई ब्रा धार दिवो कारणे एसबीआई ब्रा जॉर्ज लगा कागज जमा साई दिया शुरू होइसे तो ताई लगा कागज सीधा गरिया हमय एसबीआई खान ब्रा इदु दिगिसे गवाजे जॉर्ज तो पयला पैसा धार करिना आसे पयला ब्रा आरो इतु बि तेरा नाय आरो पयला ब्रा पैसा धार करिना दूसरा बैंक दे आसे गइना दिखि पाइसे तायन तो ताई लगा कागज सीधा करिया हमय एसबीआई खान ब्रा दिखिसे जॉर्ज तो पयला पैसा धार करिया धरिगिना आसे इदु दूसरा बैंक लगोले एसबीआई ब्रा जॉर्ज के कइसे ताई दो पयला साल दे बैंक एकता लगोदे पैसा धार करिगिना आसे इतु किना तो ताई दो इतु लिखे हिसाब तो ताई 11,000 निशना पंजाब नेशनल बैंक लोगोदे पैसा धार करिना आसे कोइना ताइखान दिखि पाइसे तो जॉर्ज तो एकदम आसरित लागिसे ताई तो पंजाब नेशनल बैंक दे नाम भी नाई नाम खुलिया भी नाई किना पैसा धार करिना ताला नाम दे तादे लागिना इतु दे ताला सिबिल स्कोर दे आइना पहुंचिसे ना आसरित तो ताइखान बिस्राइना जाइसिले हसाबी जॉर्ज तो ताइला नाम दे ब्रा पैसा धार करिना थाकी दिसे पंजाब नेशनल बैंक लोदे और ताई को हिसाब तो ताई तो पंजाब नेशनल बैंक दे नाम भी नाई को आसे और बैंक अकाउंट भी नाई को आसे इतु लगा खिसा तो सब अदालत आरो जिला दारोगा खान ब्रा ही सावले करिबले पारिबो इतु दो মই खान इतिया तो बेसिबा कोले ना पारिबो हले इमान ताकासे कोइना इसे মই कोले मन जादो अपनी ला अमा बाबा दीदी भुइनी कोकाई दादा दादी खान कुनबा किनार बस्ती दे अपनी ला खानदान और साथी खान लोगों दे इतु वीडियो पठाई दिले एकदम भालो होना ये इन्हीं पीछे दे ताई खान के की पैसा ला कोथा बैंक ला कोथा नोएली भी कुनबा मानु खान ब्रा ताई खान के फोन दे कोथा करी किना पैसा लुई लो ला कोथा इमान दे ब्रा फासाई दिउले ब्रा बाचाई लो ताई खान ना जानी ना मानु ब्रा थोकाई दी थाइगुले भी moi खान ना जाने मानुरा अपनी लागा पैसा बाबा आमा लागा पैसा सब गायब करिना थाइले भी ना जानिवो आज तो moi खान दुईता किसिम किना थोगा बास खान ब्रा देश पूरा दे आमा बाबा और बुरा बुरी खान के थोगाई दिगिना पैसा लाख ब्रा क्रोर ब्रा चिली लोए आसे इतु कथा करिउले आसे कोआ निशना अपनी इतु वीडियो तो सब मानु लोग दे शेयर करिले एकदम भालो हो किले माने अपनी शेयर करिया ब्रा इतु ब्रा भी कि जाने कुनबा मानु लागा पैसा रो इज्जत के भी इने बजावले पी पारिवो moi खान ना जाने तो इनी इतु भी शेयर करि दिले एकदम भालो होना ये ना कोई आसे. It was absolutely surreal. My reporter told me about this crazy story. A man from Dimapur went to his bank at the SBI to apply for a loan. Now, during that process, they found out from his CIBIL score that he had apparently had another loan from a long time ago from another bank. Now, reportedly, the loan was with the Punjab National Bank, and it was apparently in his name. Now, only the police and the authorities can offer clarity in this strange case.
কথা do kina itu manu laga naam bra dusra bank de tala naam bra paisa dhar kuri kina thagije itu do sorry dekte ma sorry kile mane ajikali do Aadhaar संख्या खान पैन कार्ड ला संख्या और फोन संख्या सब एकता ही आसे और सब एक जन मानु लोग दे बंदी छोई की ना आसे और महिला हिसाब तो इतु तो आधार नोइली पैन कार्ड इतु नाला गया पहला हो मोई दे दूसरा मानु रा इतु जॉर्ज लगा नाम रा पंजाब नेशनल बैंक लोग दे पैसा धार लोइश ना कि ना भी भाभी आसे इतु हो मोई दे तो पहला दे इतु आधार कार्ड का भी था क्या ने नहले भी पैन कार्ड खान भी हुदिया नहीं आजिकाली निजना तो हले भी महिला रिपोर्टर के महिला हुदिशे पंजाब नेशनल बैंक लोदे नाम एकला नोहेगिना घोरला पता नक्शा फोन संख्या बस्ती कहार जिला नाम पूरा था युदो तो इतु कांडो साना इतु इना गुना महिला रिपोर्टर के हुनिशे इनी था गया तो था युवो इनी नाम एकला ही गुसाईगिना पैसा धार दिवले नोय बैंक खान दो नाम दी ना किबा कागज खान बिसी दी ना थायो और लिखी ना थायो और इतु तो बैंक लोदे थायो इतु तो पुलिस ला काम आसे कुनबा दो भाबी थायो इतु जमाना रो दुनिया दे मानु क्रोर ऊपर दे क्रोर मानु आसे नाम की भी हजार लाख थायो पाए किले मानु इतु दुनिया फर्टा मानु आसे और नाम की हुआ तो इनी मैखानी हुनी थाकी पाए हुनी थाकी तो कान दिखी पाए मैखान तो कुनबा तो गोबो इनी की नाम लाग्या ही हो ना ये इकुन हो कथा तो इतु अपनी ला नाम और 1000 दूसरा मनु ला नाम एक ही होले भी कुन होले भी और दूसरा आसे होले भी बैंक ब्रा तो इनी जानी लो कथा तो इतु जॉर्ज ब्रा को तो ताई तो पंजाब नेशनल बैंक दे नाम ना अकाउंट ना को आसे होले भी सिबिल स्कोर दे दो ताई ला नाम दे आई ना छोई ना ही बोहाई दे ताई ही पैसा धार लोइसे कोई ना ताई ला नाम दे लागी जाए से इतु तो बैंक लो दे जाएगी ना नाम आरो पता नोले भी सब साइले ही नहीं जानी वो ना कि तो आसरित को था तो ताई तो नाम ही ना होली ताला नाम दे लागी ना यहाँ से इतु तो क्या से इतु तो इन्हीं पुलिस खान जाए ना पुलिस लो दे जाए ना दारोगा खान लो दे जाए ना अदालत लो दे जाए ना ताते बराही इतु फैसला कोई दिले बाल होले भी कथा हिसाब तो इतु तो कुम्बा रा फसाई दिया ला कथा निशना भी हुआ निशना भी नहीं लग गया से Yes, citizens can have a bank account with the same name as another person, and sharing the same name is not a problem here, though, ladies and gentlemen. The bank accounting security and identification framework is designed to accommodate individuals with the same name. There could be thousands of people, millions of people out there with the same name, but still there would be high security identification framework within the bank so that they are able to tell two different persons even though they might have the same name. Now, all the bank security apparatus can do so by using other unique identifiers such as the customer identification file or the CIF number, for example. So, when applying, you'll provide your personal details and the bank will use your unique CIF, which is a unique 11-digit number associated with your account to differentiate it, to tell it apart from other customers with the same name. So in the case of George, we have absolutely no idea what's going on. Even if you share the same name with 1,000 other names, someone else's CIBIL score or credit score just won't reflect in your account just like that, or it won't reflect on your name just like that. Kwanishna ajido duita kisim thoga laga kotha koriwo. Age kotha ek Manura apni laga naam bra और अपनी ला नाम लोइना बैंक देवरा पैसा धार लोई लुआ अपनी ना जनी ना दुई कोता दूसरा मानुरा अपनी के दोगरा से कोई ना सरकारी से कोई ना बैंक से कोई ना अपनी के की भोई खिलाई दी ना पैसा लोई लुआ आगे किसिम ला कोथा दो मैखान कोई पैसे तो जॉर्ज ला कोथा कोई दाइसे और पंजाब नेशनल बैंक और SBI ला कोथा कोई था इतु तो कोथा आगे ला तो ऐसे इतिया तो अमीखान मैखान दुई कोथा दूसरा को कि ऐसे इतु अपनी तो नहीं जाने इतु कारणी तो होशियार लगा कोथा दो एना ही ऐसे अपनी ला फैन कार्ड और
আপনি লা ফ্যান সানকিয়া আর আধার কার্ড লা সানকিয়া এই দোকান সব ভালসে রাখিবি কিতিয়া বি দুইজন লাগা এটু দুইজন লা সানকিয়া খান একজন লগতে না রাখিবি আর নে দেখাবি একজন লগতে মানুষকে নিদিবি আজিকালি তো মানুষ খান কি ওটিপি লা আছে গই না কি ওটিপিও তো আছে গই না ফোন লা সানকিয়া আছে গই না নহলে বি আধার লা সানকিয়া প্যান কার্ড লা সানকিয়া তাই খান মাঙি আইব নইলে মাঙি থাকে না দিবি আপনি বিশ্বাস না থাকে মানুষ নইলে বি খানদান একদম বিশ্বাস থাকে মানুষ নইলে থাকি ইটো মানুষ কি লই নিদিবি বেংক রা আপনি কে লাগিলে তো বেংক দে মাতিব দারোকা খান রা আপনি কে লাগিলে তো দারোকা ঘর দে আইবি পুলিশ স্টেশন দারোকা ঘর দে আইবি এনা তাই খান মাতিব খুদাই ইটো ইয়াদ রাখিবি আপনি বি SBI হবি কানাড়া ব্যাংক হবি HDFC হবি তাই খান বি কই নিজর গে মই খান কিতিয়া বি আপনি লা ATM laga sankia Aadhaar laga sankia noile bi PAN card laga sankia kitia bi ituan na mangiwo itu yad rakhibi tai khanra lagile bank de aibi kobo daroga de aibi kobo noile bi thana de aibi kobo noile bi itu gajar de aigina kotha koi lobi ena khudibo itu hudai yad rakhibi itiado moi khan dhoga tui kisim ulala kotha to kuri sabo কোৱা নিচিনা আপনি লা বাবা আমাৰ দাদা দাদি আৰু খুটি গান বস্তি মানুহ আৰু সাথী খান লগতে ইটো আপনি ইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি পঠাইলে একদম ভাল হ'ব নেকি না ভাবি আছে কি জানে তাই খান আপনি লা ভিডিঅ' আপনি পঠা ভিডিঅ'টো চাই কিনে ইটো কাৰণে তাই খান থকা বাছ খান লা জাল পলাবলৈ পাৰিব নেকি না ভাবি আছে এতিয়া মই খান লা দেশ পুৰা দে একটা ধোকা কালাংগাৰী একটা যাই আছে আৰু ইটোতো বুঢ়া বুঢ়ী খান আৰু কোন কাম কৰি আছে তাই খানকে বেছি ফাঁচাই দি না যাই আছে হাজাৰ একলা নহয় লাখ একলাই নহয় মানুহ খান নহয় নি ক্ৰৰ হিচাপৰা থকা পাছ খান বুঢ়া বুঢ়ী খান লগতে আৰু বাবা আমাৰ কাম কৰি মানুহ খান লা হাত পৰাই নি চিলি লৈ যায় পলাই যায় তাই খান চুৰ কৰি লৈ যাই আছে ইটোলা কালাংগাৰী তো আংগ্ৰেজী তো ডিক্টেটৰ এৰেষ্ট কয় মানে ধগাবাজি খান আৰু গুণ্ডা খান চৰকাৰী চাপ আছে গৈ না দাৰোগা চাপ আছে গৈ না বেংক চাপ আছে গৈ না CBI এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেট আছে গৈ না আৰু চৰকাৰী নাম লৈ কিনা আপনিকে সুধি আহে আৰু আপনিকে গড় যাওনি দিয়ে গাবজা রাখি দিয়ে ইটো ভয় খেলাই দি কিনা আপনি নহা কাম করে আছে গই না হিসাব কিতাব মিশি করে আছে গই না কালা পয়সা আর চুর পয়সা খান লই না চুপাই আছে গই না চুর পয়সা লুকাই আছে গই না আপনি লো দে হুদাহুদি করে সরকারি লা নামরা আপনি লা পয়সা ঠিক নাই নাম সাম ঠিক নাই কাগজ ঠিক নাই এনা গই না তাই কবজা লাগাই আপনি লো দে কবজা দে রাখাই দে তাই খান কি লাগা নামরা ইটু কেস উটু কেস আজি গই না সরকারি লাগা নামরা আপনি লাগা পয়সা সব লই রাখিব আর ইটু হুদাহুদি হওয়া পিছে আপনি তাই খান কব আপনি লাগা পয়সা কিমান মই খান লাহাতে আজি তখন সব বাপাস করে দিব কই না আগে দে পই খেলাই দিব আর তাই খান আপনি লাগা পয়সাটো সব লই লব পিছে দিব কই না আর হুদি বেশি করিব বই খেলাই দিব দেশে ইটো লাগা ধোকা বেশি এতিয়া তাক বেশি ঘুরি যায় আছে 4-5 দিন আগে দেবি একটা মানুষ দিল্লিতে 33 crore 23 crore 33 crore কামাই রাখিয়া পুরা চুরিচর চুরনা লই যাইছে ইটো তো সেপ্টেম্বর 30 ইটো সালহি দিল্লিতে হইছে একটা বুঢ়া মানুষ 70 সাল ওপর হইছে তাইলা কামাই কিমান থাকিছে সব এনা লাগা থকা কালাংগাৰী দে হাৰাই যাইছে তাইলা নাম তো নাৰেশ মালহোত্ৰা আছে আৰু তাই তো বেংক দে কাম কৰি না আহিয়াত মানুহ থাকিছে ৰিটায়াৰ্ড তাই তো থকা বাজি খান এক মহিনা নিচিনা ঘৰ দে বন কৰি ৰাখি দিছে কেলে মানে উদুকান তাই খান CBI আছে গৈ না নহলে বি চৰকাৰী আছে গৈ না তাই চৰকাৰী নাম লৈ না তাকে ভয় খেলাই দিছে ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে গৈ না তাকে গৈ ৰাখি দিছে
itu kina hoise koile do itu thoga bazi aro gunda khan bra sarkari police la nam loi gina tai khan ge janki kuri ase goina investigate janki kuri ase goina poisa khan sob sarkari bra sai sabo goina tai la poisa loi loise ekdam morom. A digital arrest is a common online scam where fraudsters impersonate law enforcement or government officials to intimidate victims into believing they're involved in serious crimes like money laundering or cybercrime. Now, a 78-year-old former banker who lost his life savings, about rupees 23 crore, his life savings, to a fake digital arrest, hopes his loss will serve as a warning to others. Now, on 1st August, Naresh Malhotra, a former banker from South Delhi, he said to have received a call from a man claiming to be from a mobile connection company. The caller told him that his credentials had been used in Mumbai to issue a connection. Okay, fine. Now, the problem was that this connection supposedly was linked to a terror case or terror cases. So the so-called connection company told the poor man that he needed to talk to the Mumbai police regarding the matter. And if they approved, he said, the connection would continue or else it would be disconnected and the matter would be reported, Malhotra said. He told this to the media people. According to reports, he soon started receiving calls from various numbers. While some callers claimed to be from the Mumbai police, others claimed to be from the Enforcement Directorate and even the Central Bureau of Investigation, the CBI itself. They started pressuring him by claiming that his Aadhaar card had been used for terror activities such as terror funding, terror activities and other serious offenses, he said. Now, the fraudsters told the former banker that he was under digital arrest, meaning he was under police surveillance and could not leave his residence. The scamsters also threatened him with passport seizure and barred him from traveling abroad. Over a period of 1 month between August 1st and September 4th, the fraudsters carried out about 20 transactions and withdrew about 23 crore from Malhotra's 3 bank accounts. The conman also wanted to know how much money he had in his bank account and told him to transfer the money to the account for verification. Now, Malhotra said the scammers sent him forged RBI certificates after each transfer to make it look legitimate. He said he was told the money would be returned and that a nodal officer from the RBI would contact him later on. That's what the media report said. Now, on September 14, the fraudsters made a fresh demand and asked Malhotra to deposit another 5 crore in the name of the registrar of the Supreme Court of India into a private bank account that was based in West Bengal. Now, the criminals told him this was the final step and that the Supreme Court was now monitoring the case. The stressed and hurting Malhotra then refused to send the money this time and told the criminals that he would deposit the amount directly with the Supreme Court itself. He also said he'd go to the police station and surrender. That's what Malhotra told the media earlier. And not surprisingly, the calls stopped abruptly. On September 19, Malhotra had no option but to approach the police, and he approached the police. Itu to Naresh Malhotra ekla hi noi aur ekta manu tai laga umor do 100 hoishna gi manishna tai do Uttar Pradesh tebra ase. Itu bi digital arrest ase goina 1 crore opor tai la poisa kamai rakhya do manura chur goi loise. To thoga bazi khan bra tai laga poisa chor goi loise. Aro itu be ine ekdam morom la kota. Itu ghatna do deri hua nai. Akbar ko hisab tai laga naam do Hardev Singh ase goise. To tai ekdin phone aise to phone uthai shile itu manu kun ase na jane tai bra itu bura baba ge arop kotha koitise. Itu bura baba to kala poisa
chor poisa kamaise na koi na itu manura taige arup kotha koise to itu manubra itu bura ke koi dishe sorkari bra tai la poisa kiman ase itu jangi kori dibo investigate kori dibo koi na taige kothai di kotha koi dishe to itu poisa do sorkari bra sabo koi na taige pothai dibi koi na mangi loise koise to itu bura bawa do ekdam bhoy lagi na taigi koshi tu hunishe aro taige utu thoga bazi khan gunda khan ge 1 crore 19 lakh nishna 1 crore 29 lakh 1 crore 19 lakh nishna pothai dishe kwase bhoyra. A shocking case of cybercrime that came to light in Lucknow from Uttar Pradesh, where a 100-year-old retired merchant navy officer was kept under what police describe as digital arrest for nearly a week, and he was cheated of about 1.29 crore. Now the victim, Hardev Singh, received a call from an unknown number. On answering, he was confronted by cyber fraudsters posing as officers of the Central Bureau of Investigation, CBI. They accused him of being linked to a money laundering case, creating fear and confusion in that man. Exploiting his vulnerability, the scammers ordered him not to communicate with anyone about the matter and compelled him to remain on the call, effectively isolating him from his family and friends. During this period, Singh was pressured into sharing his personal bank details. Hours later, when his son returned home, according to reports, Singh narrated the ordeal. His son then engaged with the callers, hoping to clarify matters. The fraudsters, however, extended their threats, warning that the family could face dire consequences unless money was transferred immediately. They instructed him to send funds to multiple bank accounts under the guise of verification, falsely promising that the money would later be returned. Now, fearing legal trouble, Singh's son complied and transferred about 1.29 crore over several transactions. Now, however, when no refund came, they realized they had fallen victim to a sophisticated scam. He then reported the matter to the National Cyber Helpline, that is, I think you should write it down, 1930-1930, that's the National Cyber Helpline. Now, following the complaint, a case of cheating was registered at the Sarojini Nagar police station in Lucknow. Now, police officials confirmed that an investigation is underway and that they are tracing or trying to trace the suspect using the phone number provided by the victims. Authorities have once again cautioned citizens to remain vigilant against such cyber scams, which increasingly target unsuspecting individuals through fear and intimidation. Itu nishna poila ek saal age devi ekta jawan computer de kam kuriya manu ekjon bi ekta manubra police ase goina police la nam loina taige thogai dishe tu jawan ge itu thoga khisa do Bangalore rase to itu manubra itu chogra ge apni do kala paisa chor paisa lukai ase goina arup kotha itu bi koi dishe age khan nishna to itu thoga bazi khan ra gunda khan ra tai la paisa sop loi loise. A similar ploy was used to steal money from a Bangalore worker who lost approximately 11.8 crore after a digital arrest. Now, the 39-year-old software engineer became a victim to a digital arrest scam and lost about 11.8 crore when fraudsters impersonating police officials claimed that his Aadhaar card was being misused to open bank accounts for money laundering activities. According to police, in his complaint, the victim alleged that he received a call from a person who claimed to be an officer of the Telecom Regulatory Authority of India. The alleged officer claimed that his SIM card, which was linked to the Aadhaar card, was used for illegal advertisements and allegedly was sending out harassing messages. Manuge apni laga Aadhaar sankhya, PAN card laga sankhya, ATM laga sankhya, PIN, OTP khan kun bhi na devi kun bhi dekhule ni devi bank khan bra bhi koi
moi kwa agede kwa nishna tai khan phone bra enaga kidiaba bi namangiwo kam lagile do hudai bank dehi matiwo aro police kan hoilebi tai khan phone bra hawa debra kotha nogoriyo police kan ki kan hoilebi daroga kan hoilebi phone debra nokowo namangiwo bishi bhag do apni ekdam dangor kam biya gori na polai thaya nohoile do apni ge police station de mangibo matibo apni ge ahibi kowo ena hoise ena koyase police station de ekbar ahibi thana de ekbar ahibi kowo bank kan bra hoilebi police kan hoilebi daroga kan hoilebi ki phone ailebi hosa police hosa daroga hosa CBI nohoilebi hosa apni laga bank kan bra apni ge lagile do tai khan bra apni ge thana de aibi bank de aibi karja de aibi kobo itu nishna apni kiba jinda thaile do tai khan ge ini mati lobi phone kori na hudi lobi ena koyase ena ahiase ki hwase na goina hudia hi balobo. Thank you for watching Hornbill TV. I'm Ngullie. See you next time.